नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। हिंदू एडिटोरियल डिक्टेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि द हिंदू एडिटोरियल की डेली डिक्टेशन हम करते हैं, जो आपकी 100 वर्ड पर मिनट्स की डिक्टेशन होती हैं। कल हमारी डिक्टेशन नहीं हो पाई थी ड्यू टू नेट की प्रॉब्लम थी। चलो हम आज की डिक्टेशन करते हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है। चलो देखते हैं। नीपा, पहले आप ये मुझे बताइए, नीपा वायरस से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नीपा आप लोगों को किस किस बच्चों ने नाम सुना है? ये देखो, ये नीपा जो वायरस है ना 2018 में आया था, और ये केरला में आया था। और इससे जो वायरस, मतलब ये जो ऐसा वायरस है कि अगर इस किसी के अंदर घुस जाता है तो उसकी डेथ कम्प्लीटली होती ही होती है। ओके, तो ये आर्टिकल हमारा नीपा वायरस के वेरिएंट्स हैं ना, उनके और देखने को मिले हैं अब ये। ओके, देखिए हेडिंग देखते हैं। नीपा एमेडिस्ट ए पैंडेमिक, जो पैंडेमिक का जो हमारा दौर चल रहा है ना, उसके बीच में नीपा वायरस। क्विक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन का जो क्विक डेवलपमेंट है फॉर ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस। ट्रॉपिकल इन्फेक्शन क्या होता है? जो एक ऐसे इन्फेक्शन जो पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, वहीं से ओरिजिनेट होते हैं और वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। इज़ ए सक्सेस ऑफ द कोरोना वायरस ईरा, मतलब एक सक्सेस है कोरोना वायरस ईरा में, यानी कि दौरान। ईरा का यहाँ पे मीनिंग हुआ दौरान। स्टूडेंट, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। कोरोना वायरस में काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें। ओके, इसको हम डिस्कशन करेंगे 100 वर्ड पर मिनट्स। Be ready? Start. India is far from being anywhere near the finish line with regard to the coronavirus pandemic, even as fears of a Nipah virus outbreak have surfaced in Kerala, with one confirmed death in Kozhikode, while confirmed cases of the viral infection have been reported several times since 2001 in West Bengal and Kerala. It was the outbreak in 2018 in Kozhikode that made headlines after 17 deaths and 18 confirmed cases, underlining the high infection associated fatality. Outbreaks feigned by exotic viruses are not foreign to India. A glance at the weekly reports compiled by the Integrated Disease Surveillance Program shows the diversity of viral or bacterial outbreaks that flash by with barely a mention, unless they threaten India's metropolises, as outbreaks of dengue, H1N1, chikungunya, or malaria sometimes do. However, SARS COVID-19 pandemic also draws attention to significant outbreaks that preceded it. Nipah and Kozhikode and Malappuram was the first outbreak where terms such as contact tracing, RT-PCR antigen test, and PPE kits became part of the ordinary discourse in Kerala. The state's public health system, earlier commended only for quality primary health care, earned appreciation for its ability to establish links between the infected and their contacts and to isolate them to prevent further spread. There are more now established protocols at the national level for the three key aspects of a potential pandemic: infection control, treatment, and vaccination. When a contagion hits, the world now understands
what can and cannot be controlled within each geographic region's context. It is these lessons from the coronavirus pandemic that must inform future outbreaks. It had become routine for Uttar Pradesh and Bihar at intervals to report outbreaks of mystery fevers when they were often easily diagnosable infections that were just a competent, accessible laboratory test away. Thus, while there is no knowing if the latest Nipah outbreak in India will patter out like in 2019 or be worse than in 2018, India must be heartened that the potential of an outbreak evokes national concern and an anticipatory response unlike the earlier and purely reactive approach. A standardized treatment of Nipah continues to be elusive, and a spike in cases could spell disaster given the high mortality rate. However, some studies suggest that vaccines developed for the coronavirus, if adequately tweaked, may prove effective against the Nipah virus too. Another potential candidate vaccine is in early human trials because vaccination continues to be the best bet against the disease. The very fact that global attention and capital no longer need to be coaxed to developing vaccines for tropical infections is itself a key difference in how the world approaches outbreaks in the coronavirus era. Full stop.